Very good morning, students. I hope you all are good and doing great in your studies. I'm your computer teacher, and today we are going to start our very first chapter, which is History of Computers. So, without wasting any further time, let's dive into the chapter. So, the name of our chapter is History of Computers, and the topics which we will discuss in this chapter are the mechanical era, which is 1623 to 1945, the first computer, digital era, and generations of computer. So before that, we have an amazing thought, which is all our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Now we have an activity which says write the number shown by the telemark. So first is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 5, 10, and 3, 13, 5, 5, 5, 15, 16, 17, and then 5, 5, 10, 11, 12. Now, moving forward, there is a boy who says, Hi Kavya, do you know the development of electronic computer? I wonder how the evolution of computer took place. How did it become a necessity in our daily life? Then she says, Mayank, no, I haven't learned about that. And then he replies, It's okay, Kavya. The development of a computer can be divided into 5 generations, and in this chapter, we will learn about it. Let's start. So let's begin the chapter. The modern computer has a long history of evolution, and there have been major developments in the field of computer since invention. जब से हमारा कंप्यूटर इन्वेंट हुआ है तब से आज तक हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशंस और डेवलपमेंट्स हुए हैं. A long time ago, the people were living without the need of difficult calculations. Long time ago, जो people थे उनको difficult calculations करने की जरूरत नहीं थी एंड उनको रिकॉर्ड कीपिंग की भी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं थी. वो काउंट करते थे विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स एंड टोज विच वर कंसीडर्ड द फर्स्ट काउंटिंग टूल. नाउ कुछ अदर काउंटिंग टूल्स उनके पास में आए एंशियंट पीपल के पास में जो क्या थे बोन्स स्टोन्स नॉट्स ऑफ रोप्स टेली स्टिक्स एटसेट्रा. एज द नीड ग्रू जैसे जैसे काउंट करने की चीजें उनको जरूरत बढ़ने लगी तो एक राइटिंग सिस्टम वॉज इन्वेंटेड. राइटिंग सिस्टम लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम और राइटिंग सिस्टम आने की वजह से नंबर सिस्टम का डेवलपमेंट भी हो गया था. नाउ अटेम्प्ट्स बाय ह्यूमंस टू डेवलप अ टूल टू मैनिपुलेट डेटा गो बैक एज फार एज 2600 BC when the Chinese came up with the abacus. फिर क्या हुआ जो चाइनीज हैं उन्होंने एक ऐसा टूल कैलकुलेटिंग डिवाइस निकाला जो हमारे न्यूमरल डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है जिसका नाम है अबेकस. नाउ जो ये हमारा फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस है मैनी डिवाइसेस वर इन्वेंटेड. बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस इन्वेंट हुए एट दैट टाइम लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स जिसकी वजह से धीरे 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 करके कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट पॉसिबल हुआ. Nowadays, computer is entirely different from the earlier devices that were invented for doing calculations, and let us observe the journey leading to the evolution of the present day computer. Here comes the first mechanical era of computers, which is 1623 to 1945. So here, what first comes is abacus. Abacus was the first calculating machine. Abacus पहली calculating machine थी जिसको invent किया था एक man ने, and the name abacus was obtained from a Greek word abax जिसका मतलब होता है slab. It has a wooden frame. इसके अंदर एक wooden frame present था पूरा which is divided into two parts जिसको दो horizontal beam of parts में divide किया गया था, and the frame contains horizontal rods of beads which have holes are passed through the rods. यानी कि क्या था कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टली ये हमारे पास वुडन रॉड्स थी सेंटर में और ये कुछ बीड्स थी जो अपने होल्स की वजह से यहाँ पे इसमें अटैच थी इन रॉड्स के अंदर. काउंटिंग वाज डन बाय मूविंग द बीड्स. इन बीड्स को मूव करके यहाँ पे काउंटिंग परफॉर्म करी जाती थी फ्रॉम वन एंड टू ऑफ द फ्रेम टू अदर. ओनली सिंपल कैलकुलेशंस जो थी वो इस डिवाइस पे हो सकती थी जैसे एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन. अबेकस को स्टिल यूज किया जाता है इन चाइना एंड दूसरे एशियन कंट्रीज में टू काउंट एंड कैलकुलेट. नाउ नेक्स्ट इज नेपियर्स बोन्स. तो जॉन नेपियर एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसको मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस को इन्वेंट किया था डेवलप किया था इन 1617. ये जो डिवाइस था ये था सेट ऑफ रॉड्स. कुछ रॉड्स थी जिनका सेट था जिसके ऊपर नंबर्स लिखे थे. देयर वर नंबर्स रिटन ऑन देम. ये जो रॉड्स थी दे वर कार्व्ड आउट फ्रॉम बोन्स. इन रॉड्स को कार्व आउट किया गया था फ्रॉम बोन्स मेटल्स वुड्स या फिर आइवरी.
नेपियर बोन्स जो थे दे वर नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। नेपियर बोन्स जो इस डिवाइस का नेम है उनके साइंटिस्ट के बेस पे ही ये नाम उनका पड़ा। नाउ पैस्कलाइन कैलकुलेटर, ये पहला mathematical calculator है in the world and it was devised by the French mathematician Blaise Pascal, and it was the first device with an ability to perform addition, subtraction and whole numbers। यानी कि whole numbers के ऊपर addition subtraction perform करने वाला ये पहला device था। This device is made up of a metal shoe box with 8 movable wheels। इसके अंदर 8 movable wheels present थी जो contain करती थी numbers 0 to 9 on its circumference। Then it comes Leibniz calculator। In 1672 एक जर्मन मैथमेटिशियन थे गॉटफ्राइड विल्हेम लेबनीज इन्वेंटेड अ मैकेनिकल कैलकुलेटर। उन्होंने इस मैकेनिकल कैलकुलेटर को इन्वेंट किया विच इज नोन एज स्टेप रिकॉर्डर। ये जो मशीन है दिस कुड परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एज वेल। ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी परफॉर्म कर सकता है। इट हैज अ स्टेप्ड सिलेंडर विद 9 teeth for varying length instead of wheels used by Pascal। बहुत सारी improved desktop calculators आए by different inventors were followed, and after 1890 many comes with improvement in storage। बहुत सारे computers में storage की improvement हुई, printing की improvement हुई of results etc। There is another fact which says Blaise Pascal invented his numerical wheel calculator called the Pascaline in 1642। And there is a one word which is calculator which means mechanical device जिसको हम यूज करते हैं बेसिक ऑपरेशंस के लिए ऑफ अरिथमेटिक ऑटोमेटिकली। देन फर्स्ट कंप्यूटर, हमारा फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था, उसको किसने इन्वेंट किया था, दैट वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक। डू यू नो व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्यूटर इन्वेंटेड? देयर इज नो इजी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ड्यू टू मेनी डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्योंकि कंप्यूटर की बहुत सारी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं जिसकी वजह से हम लोग ये जस्टिफाई नहीं कर सकते दैट फर्स्ट कंप्यूटर कब इन्वेंट हुआ था। तो द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर जिसको क्रिएट किया था चार्ल्स बेबेज ने इन 1822, वो पहला एक डिफरेंस इंजन था एंड द डिफरेंस इंजन वाज केपेबल ऑफ कंप्यूटिंग सेवरल सेट ऑफ नंबर एंड मेकिंग हार्ड कॉपीज ऑफ द रिजल्ट। इसके पास 5 थीम्स थी जैसे इनपुट, आउटपुट, स्टोर, मिल एंड कंट्रोल। आफ्टर दैट 1833 में क्या हुआ, जो चार्ल्स बेबेज थे उन्होंने डिवाइस किया एक दूसरा कैलकुलेटर जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। टेक्नोलॉजी जो थी एनालिटिकल इंजन की वो प्रोवाइडेड बेस, उसने एक बेस प्रोवाइड किया टू द टेक्नोलॉजी ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। इट इज द फर्स्ट एवर वर्किंग मॉडल, ये पहला वर्किंग मॉडल था ऑफ मैकेनिकल कंप्यूटर। दिस इज वाई जो चार्ल्स बेबेज है हम उनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। अगस्ता अडर लवलेस वो ऐसे एसोसिएट थे ऑफ चार्ल्स बेबेज हु रोट प्रोग्राम्स। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्रोग्राम्स लिखे थे चार्ल्स बेबेज के लिए फॉर हिज कंप्यूटर एंड नोन एज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। देन पंच कार्ड सिस्टम्स आए। पंच कार्ड सिस्टम्स क्या होते हैं, इनको हम यूज करते थे फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डेटा। दिस वाज इन्वेंटेड बाय हर्मन हॉलरिथ। हर्मन हॉलरिथ ने इसको इन्वेंट किया था। वो एक अमेरिकन statistician in US Census Bureau around 1890। जो सिस्टम था वो स्टोर करता था डेटा कोडेड इन द फॉर्म ऑफ पंच्ड होल्स। इसको हम यूज करते थे, ये यूज करता था पंच कार्ड्स एंड मेटल रॉड्स जो पास करते थे थ्रू द होल्स टू क्लोज द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड दस कॉज अ काउंटर टू एडवांस। There is a fact which says Ada Lovelace was an English mathematician and writer। She was the first, वो first थी जिन्होंने recognize किया था that the machine had applications beyond pure calculations, and उन्होंने publish किया first algorithm intended to be carried out by such a machine। Next is digital era। Coming to the digital era, जो binary system है उसने क्या किया था, एंटर किया इनटू द कंप्यूटर वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम जीरोस और वंस जो थे दे वर यूज्ड एंड दिस सिस्टम वाज सजेस्टेड बाय क्लॉड शैनन एन अमेरिकन मैथमेटिशियन। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था वो बिल्ड किया था डॉक्टर जॉन विंसेंट एटनसॉफ ने। वो एक फिजिक्स प्रोफेसर थे एंड क्लिफोर्ड बेरी। द कंप्यूटर वाज नेम्ड एज एबीसी। कंप्यूटर का नाम था एबीसी। It stands for Atensov Berry computer।
ये जो कंप्यूटर था इसने वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया था फॉर डेटा स्टोरेज एंड इट वाज डिजाइंड मेनली फॉर सॉल्विंग सिस्टम फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास मार्क वन। तो इन 1944 जो पहला ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर था उसका नाम था मार्क वन, जिसको डेवलप किया था हार्वर्ड हैथवे एकिन ऑफ हार्वर्ड ने। मार्क वन वॉज 8 फीट हाई, ये 8 फीट हाई था एंड 55 फीट लॉन्ग, और ये केपेबल था टू एग्जीक्यूट लॉन्ग कॉम्पिटिशंस ऑटोमेटिकली। देन ENIAC, which was the first general purpose electronic digital computer, जो built हुआ था 1946 में, and it was developed by John Mauchly and J. Presper Eckert, which contained, इसके अंदर 18,000 waves and used to consume 100 kilowatts of power। ये 100 kilowatts of power consume करता था and इसका जो weight था वो कुछ tons था। It was a huge machine, बहुत बड़ी मशीन थी with a huge power requirement, जिसको बहुत ज्यादा power requirement की जरूरत थी, and was capable to solve computing problems and it was faster than Mark 1। Now एडवैक इन्वेंट किया था जे पेस्पर एकर्ट ने एंड जॉन मॉशली ने। इट वाज टू बी द वास्ट इम्प्रूवमेंट अपॉन एनियाक, ये एक इम्प्रूवमेंट है एनियाक के ऊपर। इट वाज बाइनरी रेदर देन डेसिमल एंड वाज अ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। जो कॉन्सेप्ट था इसमें स्टोरिंग डेटा था एंड इंस्ट्रक्शंस का इनसाइड द कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड हियर। कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज का कॉन्सेप्ट था वो इसके अंदर आया था। नेक्स्ट इज यूनिवैक वन। ये पहला कमर्शियल कंप्यूटर था जिसने फास्ट कैलकुलेशंस करी थी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल अरिथमेटिक एंड डेटा ट्रांसफर। There are some full forms. ENIAC means electronic numerical integrator and computer. ADVAC means electronic discrete variable automatic computer, and UNIVAC means universal automatic computer. Now UNIVAC 1 जो था वो capable था to handle both numbers and text data, और इसको डिजाइन किया था principally by J. Presper Eckert and John Mauchly, जो इन्वेंटर्स थे ENIAC के in 1951। The machine was 25 feet by 50 feet in length, जिसके अंदर 5600 ट्यूब्स थी, 18,000 क्रिस्टल डियोड्स थे एंड 300 रिलेज। ये यूटिलाइज करती थी कुछ सर्किटरी 2.25 mH bit rate and had an internal storage capacity of 1000 words। 1000 words की इसके पास इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी थी या फिर 12,000 कैरेक्टर्स की। नाउ जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर के कौन कौन सी वेरियस जनरेशंस है। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर हैज फॉलोड डिफरेंट स्टेप्स इन टेक्नोलॉजी। यूज्ड इन दीज स्टेप्स टू टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस आर कॉल्ड जनरेशंस। यानी कि कंप्यूटर के इन्वेंशन में जो डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन में टेक्नोलॉजी का डिफरेंस आया है उसको यहाँ पे उन्होंने जनरेशन डिफरेंस का नाम दिया है। कंप्यूटर हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम अ लार्ज साइज सिंपल कैलकुलेटिंग मशीन टू अ स्मॉलर बट मोर पावरफुल मशीन। यानी कि कंप्यूटर का जो इन्वेंशन था वो ऐसे इवॉल्व हुआ है कि पहले वो उसका साइज बहुत बड़ा होता था, बहुत पावर कंज्यूमिंग था, लेकिन अब वो साइज में भी छोटा है और वो अच्छे रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है। The evolution of computer to the current state is defined in the terms of generations of computer. Each generation of computer जो है वो डिजाइन है बेस्ड है एक नई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे, resulting in better, cheaper, smaller computers that are more powerful, faster and efficient than their predecessors. Currently there are 5 generation of computers। हमारे पास currently 5 generation present हैं कंप्यूटर की। Before starting them we have some cool facts, which is MHz यानी कि megahertz is a unit of alternating current, that is AC, or electromagnet, which is EM, wave frequency equal to 1 million hertz, which is this। Now first generation of computer की बात करते हैं, so it was from 1940 to 1956। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो थे उन्होंने वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया था बिकॉज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स उनका साइज बहुत बड़ा था, उनको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, दे वर वेरी एक्सपेंसिव टू ऑपरेट। दे ऑल्सो यूज्ड पंच टेप, उन्होंने पंच टेप का भी यूज किया था इनपुट और आउटपुट के लिए। ये बहुत ज्यादा हीट जनरेट करते थे एंड दे वर बेस्ड ऑन मशीन लैंग्वेज। एग्जाम्पल्स है ENIAC, ADVAC, Mark 1, UNIVAC 1 etc। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारी थी फ्रॉम 1956 टू 1963 एंड इन द लेट 1950। तो जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गए थे, इन कंप्यूटर्स ने यूज किया था
ट्रांजिस्टर्स था इन द प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स जो कंज्यूम करते थे लेस हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नाउ ये साइज में थोड़े छोटे थे, फास्टर थे, ज्यादा एफिशिएंट थे और लेस एक्सपेंसिव थे एज कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, और ये बेस्ड थे असेंबली लैंग्वेज पे। एंड जो एग्जांपल्स है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स के, दे आर IMP 700, ENIAC 1401 एंड CDC 160। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारी है 1964 से 1971। डेवलपमेंट जो था यहाँ पे वो हो गया था इंटीग्रेटेड सर्किट का, which was a major breakthrough resulting in the introduction of the third generation computers। ये जो कंप्यूटर्स थे ये चीपर थे, साइज में छोटे थे एज कंपेयर टू द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। इन्होंने यूज किया ऑपरेटिंग सिस्टम को that allowed machines to run many programs simultaneously। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से इन कंप्यूटर्स में क्या होता था कि मल्टीपल प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली पे वो वर्क कर सकते थे। The languages used in this generation were BASIC, COBOL, etc. Examples PDP-11, IMB, but IBM 370, etc. नेक्स्ट हमारे पास आती है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो थी 1971 टू प्रेजेंट। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स ने क्या यूज किया था, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया था, और बहुत लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स को हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स या फिर चिप्स। तो हमारे पास फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए थे। दे आर स्मॉलर इन साइज, चीपर, फास्टर एंड वेरी इजी टू हैंडल। यहाँ पे जो रिडक्शन थी वो हो गई थी कॉस्ट की एंड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर पावर की at a small place allowed development of portable computers। ये जो जनरेशन थी कंप्यूटर्स की ये बहुत इजी हो गई थी टू यूज एंड कैन बी यूज्ड वाइडली फॉर पर्सनल एप्लीकेशंस। जो यहाँ पे लैंग्वेज यूज करी थी इस जनरेशन में वो थी C++, SQL, etc। और इसके एग्जांपल्स हैं IBM 090, 600 सीरीज एंड Cray 2। There is one cool fact more, which is in 1981, IBM introduced the first personal computer यानी कि PC for the home users, and in 1984 Apple ने introduce किया Macintosh। Fifth generation of computers, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है फ्रॉम प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। ये जो जनरेशन है इसने क्या यूज किया, इसने यूज किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, दैट इज दे आर एबल टू सिमुलेट ह्यूमन बिहेवियर। यहाँ पे जो कंप्यूटर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, एआई की वजह से ह्यूमंस को सिमुलेट कर सकते हैं। वो यूज कर सकते हैं सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स जिनको हम बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। दे हैव लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, हाई स्पीड एंड आर एबल टू थिंक एंड टेक डिसीजंस लाइक ह्यूमन बीइंग। तो जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स है वो क्या कर सकते हैं, वो सोच सकते हैं, लर्न कर सकते हैं लाइक ह्यूमन बीइंग्स, और डिसीजंस भी ले सकते हैं लाइक ह्यूमन बीइंग। दे आर यूज्ड इन एरियाज जैसे डिजाइनिंग, रोबोटिक्स, एक्सेट्रा। ये बेस्ड है हाई लेवल लैंग्वेजेस पे, फॉर एग्जांपल IBM नोटबुक्स, Pentium PCs एंड Param। दे आर स्टिल इन रिसर्च, अभी भी उन पे रिसर्च चल रही है और डेवलपमेंट फेज में है अभी भी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। There is another fact, which is the first supercomputer was assembled in India, installed at IIT BHU in 2020. As of November 2022, Param Siddhi AI was the fastest machine in the Param series, ranking 63rd in the world. Let's remember the chapter. Abacus was the first calculating machine invented by man. Pascaline calculator वो पहला mathematical calculator है in the world. Charles Babbage created difference engine in 1822. Augusta Ada Lovelace was known as the first computer programmer, and UNIVAC 1 was the first commercial computer. Fifth generation computers are based on artificial intelligence. Let's do the exercise of the chapter. So here our very first question is, tick the correct option. First commercial electronic and fastest computer is ENIAC. Then who is known as the father of computers? Charles Babbage. Automatic digital computer. First automatic digital computer was ABC. And which language is used in the fourth generation computers? C++. Into which generation of computers vacuum tubes were used? First generation. Now our second question is, fill in the blanks. The era of first generation computer was from 1946 to 1959. Dash was the first mathematical calculator in the world, Pascaline. First commercial computer, ENIAC. Second generation computers ने क्या use किया था, transistors. And Babbage designed machine called electrical engine in 1813.
Next, true false. Pascaline was invented by Robert Blaze. False. Charles Babbage invented the difference engine. True. The era of third generation of computers was from 1945 to 1960. False. Param Siddhi AI is the fifth generation computer. True. Fourth generation of computer began with the invention of microprocessors in 1990. So students, this was your chapter about the history of computers and its various generations. I hope it is clear to you. Do revise it once at your own and also learn the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye bye.